सर साउंड नहीं आ रहा, माइक ऑन कर लें। Okay. So this hyperbola is the shape just like that. इस पर डबल शेप बनती है। पैराबोला में सिंगल होती है, हाइपरबोला में डबल शेप बनती है। So this is the hyperbola. This is also the hyperbola. ये जो है this is the vertex where it is intersecting the. This is also the vertex V dash. This is the center. This is y-axis. This is x-axis. This is the center. Origin is the center. And here is the point F. Focus. Here is another point F dash. This is another focus. तो जिस तरह उसमें भी दो वर्टिसेस दो फोकस होते थे इलिप्स में, इसमें भी दो वर्टिसेस दो फोकस होते हैं। और इसकी इक्वेशन एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1. This is the standard equation of the hyperbola. The difference of the ellipse is there is plus sign. In the ellipse there is plus sign, and in the hyperbola there is negative sign in between them. X square upon a square minus y square upon b square. When the major axis is long, the transverse axis on the x axis, और अगर transverse axis on the y axis हो, if it is in this way, it may be in this way also. Here it may be in this way also. When the hyperbola in this way, that means the transverse axis or is along the y-axis. So यहाँ vertex होगा, यहाँ vertex होगा. There will be the focus. There is another focus f dash. One focus. There is another focus. In this case, we will write y square upon a square minus x square upon b square equal to 1. So if x square is positive, the transverse axis along x axis. If the y square is positive, transverse axis along y axis. Before that in the ellipse we were seeing the larger number. x square के नीचे larger number होगा या y square के नीचे larger number होगा, जिसके नीचे भी larger number होगा वो transverse axis होगा. यहाँ ऐसा नहीं है, ये भी larger हो सकता है, ये भी larger हो सकता है. यहाँ ट्रांसवर्स एक्सिस क्या होगा, जो पॉजिटिव होगा. इफ एक्स स्क्वायर इज पॉजिटिव, ट्रांसवर्स एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस. इफ वाई स्क्वायर इज पॉजिटिव, ट्रांसवर्स एक्सिस अलोंग वाई एक्सिस. हियर द वाई स्क्वायर इज पॉजिटिव, सो ट्रांसवर्स एक्सिस अलोंग वाई एक्सिस. हियर द एक्स स्क्वायर इज पॉजिटिव, ट्रांसवर्स एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस. So this is the distance A. This is the distance minus A. And from here to here the distance is C. सब इसमें देखें C बड़ा है. From center to the focus is the distance C. From center to this focus the distance is minus C. From center to the vertex is distance A. From center to the vertex is minus A. So in this figure you can see that C is larger than A. C is larger than A. C is the distance from center to the focus. A is the distance from center to the vertex. So here is C is larger than A. In the here also this is A, this is minus A, and from here to here is C, and from here to here the center, this is minus C. So C is larger than the A.
So which one is a positive? That will be the axis of the transverse axis of the hyperbola. If x square is positive, the transverse axis will be along x-axis. Y square is positive, transverse axis along y-axis. तो ये इसमें हाइपरबोला और एलिप्स में फर्क है. वहां हम ये देखते थे कि कौन सा बड़ा नंबर है, क्योंकि दोनों पॉजिटिव थे. उसे पॉजिटिव नेगेटिव का तो कोई चक्कर था ही नहीं ना, दोनों पॉजिटिव थे, तो फिर उसमें हम ये देखते थे कौन सा बड़ा है. अब इसे पॉजिटिव नेगेटिव है तो पॉजिटिव वाला ट्रांसवर्स एक्सिस होगा along, और नेगेटिव वाला अदर एक्सिस होगा. So that now the relation between A, B and C. So इसमें C square बड़ा है, so C square is equal to A square plus B square. C square is equal to A square plus B square. उसमें क्या था, एलिप्स में C square is equal to A square minus B square. उसमें माइनस क्या करते थे हम, यहाँ प्लस करेंगे. To find the value of C, C are the coordinates of focus, C comma A, and here minus C, sorry, C comma 0 and minus C comma 0, और vertex क्या है, A comma 0, there the minus A comma 0. तो ये आपने याद रखना है. और इक्वल टू 1 उसी तरह है, सिर्फ प्लस और माइनस का डिफरेंस है एलिप्स और हाइपरबोला का. बाकी अब ये रिलेशन का फर्क है. इन द हाइपरबोला C स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, जबकि एलिप्स में C स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर था. ये एलिप्स का था, तो ये हाइपरबोला का होगा. Hyperbola, the relation between C, A and B. C square is equal to A square plus B square. This is the relation between A and B. Equation में A और B होता है, उससे हम C निकालेंगे. So on any one of these three, any two of these three are given, so we can find the third one by this relation. C square is equal to A square plus B square. If the equation is given, so that means A square and B square is given, we can find C square. If we have to find this equation, then the coordinates of foci and coordinates of the vertices will be given. यानी A और C given होगा, तो हम उससे B निकालेंगे और ये फिर यहाँ पर पुट कर देंगे. So now we will do the exercise. Exercise 19.10. And to find the equation of the directrix. Directrix क्या हो गया? This is the line which is just touching ये क्या डायरेक्ट्रिक्स होगा, एक ये डायरेक्ट्रिक्स होगा, अदर देयर आर टू डायरेक्ट्रिसेस, एक ये होगा. passing through the center and just touching the hyperbola. So that is the directrix. So how to find the equation of the directrix? Equation of the directrix. Equation of the directrix. Directrices.
So first of all, we find the equation of the hyperbola. First of all, we find the equation of the hyperbola, that is x square y square upon x square upon a square minus y square upon b square equal to 1, or y square upon a square minus x square upon b square equal to 1. तो ये इक्वेशन सबसे पहले आप फाइंड आउट करेंगे, फिर आप 1 को इक्वल टू 0 सपोज कर लेंगे. When we are finding the equation of the directrix, we will take it any one of these two equations. So 1 will be replaced by 0. To find the equation of the directrix, 64169 Daniel Humayun. To find the equation of the directrix, 1 will be replaced by 0. ये इक्वेशन है या ये इक्वेशन है, इन दोनों में से जो भी इक्वेशन है 1 को रिप्लेस कर देंगे 0 से. So for example, we are taking this one, x square upon a square minus y square upon b square, 1 will be replaced by 0. After that, y square will be shifted. If it is negative, we will shift on the other side. If it is positive, we will minus x square will be shifted on the other side. नेगेटिव जो है उस तरफ ले जाएंगे, तो इसको y स्क्वायर को उस तरफ ले जाएंगे, so it will become y square upon b square, और इस तरफ रह जाएगा x square upon equal to x square upon a square. Now we will find the value of y. b square will be shifted on the other side. यहाँ सिर्फ y square बच जाएगा, b square will be shifted over there. It will become b square upon a square into x square. Take the square root. We will take the square root. It will become y is equal to y will become, we will take the square root of this one, so square root of y square will be y, and we will take the square root of whole this one, it will become plus minus b upon a into x, b upon a into x. This is the equation of the directrix. Y is equal to, हम equal to 0 करके y की वैल्यू निकालनी है, y equal to something in terms of x. So this will be the equation of the directrix. याद रखें, बजाय इक्वेशन याद रखने के आप इक्वेशन याद रखनी है, आप इसको सिर्फ इक्वल टू 0 पुट कर दें और उसके बाद y की वैल्यू फाइंड आउट कर लें, क्योंकि b और a चेंज होता रहता है. Sometimes this is the b, sometimes this is a, उसमें कोई फर्क नहीं. Okay, understood? Anything do you want to ask? No. Okay. We will do the exercise now. Now we will do the exercise 19.9. Sorry,
19.10. Exercise 19.10. In exercise from 1 to 12, find the vertices and foci of each hyperbola. Draw each auxiliary rectangle and the asymptotes and sketch. Sorry, this is not the directrix, this is the asymptote. Directrix is in the parabola. These are called the asymptotes. These equations, these lines are called asymptotes. Remember, asymptotes. So these lines which are touching, just touching the hyperbola, that is called the asymptotes, not the directrix. By mistake, I told you directrix. Directrix is the line which is equidistant from the focus and the parabola. That is in the parabola, not here. So that equation is the equation of the asymptotes, not the equation of the directrix. So now I will do the question number 1. X square upon 16 minus y square upon 9 equal to 1. What we have to find? We will find the vertices and foci and draw, and the equation of the asymptotes. So question number 1, x square upon 16 minus y square upon 9 equal to 1. This is the standard equation. In between, the negative sign is showing this is not the equation of the ellipse, but this is the equation of the hyperbola. Negative sign बीच में होगा तो equation of the hyperbola होगा. Remember it. So positive क्या है? X square positive है. Therefore, transverse axis along x-axis. Transverse axis along x-axis, and this is x square only. Now, so it means x minus 0 whole square, and y square means y minus 0 whole square. So center will be 0, 0. We found the two things. So this is a square. 16 larger will be the a square. Transverse axis along x-axis to x square को जो नीचे है वो a square है. So a will be equal to plus minus 4. y square के नीचे b square है. b will be plus minus 3. So first of all, we have to find the vertices. Vertices a होता है. This is along x-axis, तो x coordinate में ऐड हो जाएगा a. तो 0 plus minus 4 will be plus minus 4, and y coordinate as it is रहेगा. Foci, we will find foci. Foci we did not find. So foci, how to find foci? So the relation is c square is equal to a square plus b square. This relation will be used to find the c value of c. So c square will be equal to a square is 16, b square is 9. So 16 plus 9, 25. So c will be equal to
plus minus 5. Therefore, foci will be equal to x एक्सिस है तो फोकस एंड वर्टिसेस जो हैं वो एक ही एक्सिस पर होते हैं. सो एक्स कोऑर्डिनेट में हम c की वैल्यू ऐड कर देंगे प्लस माइनस 5. सो इट विल बिकम प्लस माइनस 5 कॉमा 0. दीज आर द फोसाई. तो हमने वर्टिसेस फाइंड आउट कर लिए, फोसाई फाइंड आउट कर लिए. फिर क्या करना है? फाइंड द वर्टिसेस, फोसाई एंड सेमी माइनर एक्सिस. तो सेमी माइनर एक्सिस बी होता है. सो बी इज इक्वल टू, ये भी हमने फाइंड आउट कर लिया. सेमी माइनर एक्सिस लिख देंगे हम, सेमी माइनर एक्सिस. ये सेमी माइनर एक्सिस हो गया. देन of each of the ellipse and sketch. So sorry. Find the vertices and foci of each hyperbola. So vertices and foci we have found. Draw each auxiliary rectangle and the asymptotes and sketch the curves. अच्छा, ये हम ड्रॉ तो बाद में करेंगे. We will find the equation of the asymptotes. We'll find the equation of the asymptotes. How to find? The equation will be taken as 0. 1 will be changed into the equation x square upon 16 minus y square upon 9 equal to 1. तो मैंने बताया था equation of the asymptotes. वहाँ मैंने डायरेक्ट्रिक्स कहा था, डायरेक्ट्रिक्स is replaced by asymptotes. So asymptotes की equation of the asymptotes के लिए 1 will be changed into 0. तो हम लिख देंगे x square upon 16 equal to y square upon 9. Oh, sorry, minus y square upon 9 equal to 0 कर देंगे. To find the equation of the asymptotes, x square upon 16 minus y square upon 9 equal to 0. 1 को replace कर देंगे 0 से. Now minus y square upon 9 will be shifted on the other side. So it will become y square upon 9 positive हो जाएगा. On this side will be equal to x square upon 16. So y square will become 9 को भी उस तरफ ले जाएं. Y square will become 9 upon 16 x square. Square root ले लें. Y is equal to plus minus 3 upon 4x. This is the equation of the asymptotes. Y is equal to plus minus 3 upon 4x. यानी y की वैल्यू निकालनी होती है कोई भी इक्वेशन ऑफ द एसिम्प्टोट्स में, the value of y is to be found. So y is equal to plus minus 3 upon 4x. This is the equation of the asymptotes. Now we will draw it. वहाँ ड्रॉ कर लेते हैं उसके साइड में जो हमारे पास जगह है. Here we will draw.
here we are drawing. ट्रांसवर्स एक्सिस along x एक्सिस है, तो यहाँ ये ड्रॉ हो जाएगा. This is the hyperbola. There will be one focus F. There is another focus F dash. There is the vertex V dash. Here is the vertex V. We found F. What is this? Plus minus 4 comma 0. So what is this? This is 4 comma 0. Here minus 4 comma 0. Focus was C. F 5 comma 0 and here minus 5 comma 0. Then draw each auxiliary rectangle. Each auxiliary rectangle क्या होगी? ये होगी. ये B की वैल्यू क्या है हमारे पास? We found B plus minus 3. We found B here plus minus 3. So यहाँ से plus 3 होगा. Suppose यहाँ कहीं plus 3 होगा और यहाँ कहीं minus 3. Auxiliary rectangle हमने क्या बनानी है? ये होती है which is touching the vertex and passing through the minor axis. This is the accelerated rectangle. This is 3 and this is minus 3. इससे पास होगी सेंटर में. So this is the auxiliary rectangle. This is called the auxiliary rectangle. Or asymptotes, a line just touching, not touching, just about to touch. This is the asymptotes. These are the asymptotes. These two. This line as well as this line. ये line के asymptotes हैं. So therefore there are two equations. Y is equal to plus minus 3 upon 4x. So there are two equations there because the asymptotes are two. There are two lines. So positive 3 upon 4x इस वाली के लिए होगा जो उस तरफ टिल्ट कर रही है पॉजिटिव साइड पर, और जो नेगेटिव साइड पर टिल्ट कर रही है उसका माइनस 3 अपॉन 4x होगा. y is equal to minus 3 upon 4 will be for this line and y is equal to plus minus 3 upon 4x will be for that line which is tilting towards the positive x-axis and the other line which is tilting towards the negative x-axis. तो उसकी नेगेटिव इक्वेशन होगी. Ali 9 62053.